transformative journey that takes you the horizon of medicine. We have very well curated of Hotel Management and Catering Technology and Department of Aviation Management. This immersive world of luxury etiquette and elders, journalists and policymakers. And the Faculty of Performing Arts, a unique learning space that follows the university's legacy of to the world of performance. Being a dynamic university, we pride ourselves in being a home to India's most enriching blend of cultural diversities, with students from all the 28 states and 8 union territories of India and over 70 nationalities. Post-graduation and a place where they develop leading medical innovations and discover the world through global opportunities. This is the PIMSR Learning Experience, a journey into the finest medical learning experience that is committed towards impacting communities by shaping the healthcare leaders of tomorrow. Welcome to this one-of-a-kind medical education experience that spans for a lifetime. And into the world of medicine, and we look forward to witnessing your growth as the healers of tomorrow. Congratulations on achieving this remarkable milestone. Your presence here today is a testament to your dedication, perseverance, and countless hours of hard work. Earning a place in this prestigious institution is no small feat, and you have truly earned it. As you begin this new chapter, remember that medicine is not just a profession. It's a calling, a journey of lifelong learning, compassion, and service to humanity. આપણા સંતાનની આ સિદ્ધિ માત્ર તેમની જ મહેનતનું નહીં, પરંતુ આપણા નિષ્ઠાપૂર્ણ માર્ગદર્શન, પ્રોત્સાહન અને ત્યાગનું પણ પરિણામ છે. આપણી સંસ્કાર અને સહકાર વિના આ સફળતા શક્ય નહોતી. આજે આપણા સંતાન મેડિકલ ક્ષેત્રની નવી યાત્રા શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે અને તેમાં આપણો ગૌરવપૂર્ણ ફાળો સદા યાદ રહેશે. સમગ્ર PIMSR પરિવાર તરફથી આપણે હાર્દિક અભિનંદન અને શુભકામનાઓ. A lasting impact on individuals and society as a whole. Parul University, one of the youngest NACC++ accredited universities in India, has its foundation firmly established since 2002. It stands as a living embodiment of India's cultural heritage, blended seamlessly with modern academic excellence, nurturing learners into responsible global citizens. and as this is going to be a tough journey, discipline has to be there in your life, right? एक हमारा खुद का टाइम टेबल होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू वेक अप एट दिस टाइम, आई विल एक्सरसाइज फॉर दिस मच टाइम, आई विल स्टडी फॉर दिस मैनी आवर्स, आई विल डेडिकेट दिस मैनी ऑफ आवर्स फॉर माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. Because if you follow the discipline in your life na, then it will shape the doctor you are going to become, right? And medical field is not only about intelligence. આપણે બહુ હોશિયાર છીએ એટલે મેડિકલ ફિલ્ડમાં આપણને એડમિશન મળી ગયું. It is not about only intelligence. It is about dedication and hard work which you are going to follow, right? So dedication and hard work is the key for becoming a good doctor in your life. Now, second advice is balancing your academic wisely. So what we have observed since last few years, since the PG NEET has come into force, that students from second year onwards, they do not attend the lecture, they do not attend the clinic, they just focus on attending the coaching class. Like what you were doing in 11th, 12th, most of the people are skipping the school and they are attending the coaching classes. But one thing I would like to request all of you, that please pay attention to the academics which are taught by teachers. See, we have very good and very dedicated professor in our medical college. Few of the professors are retired professor from the government medical college and they teaches excellently. So if you miss that part of your teaching in your MBBS life, you are not going to gain that knowledge from a book or from a coaching class. And let me tell you, if you dedicatedly follow your textbook, the prescribed textbook and the teachings of your teacher in your class, and if you focus on the clinical teaching in your hospital and in your wards, this is suffice for clearing the PG NEET exam. જેમ 11th-12thમાં કહેવામાં આવે છે કે તમે CBSEની NCERTની ટેક્સ્ટબુક છે એના ઉપર જ ફોકસ કરો, એટલું જ વાંચશો ને તો પણ તમને એટલા માર્ક તો આવી જશે કે તમે MBBSમાં એડમિશન લઈ શકો. 150 students that we had,
This year is the first big batch of 200 students, and we are celebrating our 10th year, a decade of our existing as a university as well as a medical institution. So you will always have a special place in our hearts. Just to brief you a little about the organization, because it's the first day and Thank you, everyone. Congratulations. This simple yet powerful act marks your formal entry into the noble profession of medicine. A journey defined by compassion, integrity, and lifelong love. In a few moments, you will take the Hippocratic Oath, a timeless pledge that takes back to the faith, the father of medicine. This oath is not just a tradition, it is a solemn promise. I respect the autonomy and dignity of my patient. I will maintain the utmost respect for human life. I will not permit considerations of age, disease, or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing, or any other factor to intervene between my duty and my patient. I will respect the secrets that are confided in me, even after the patient has died. I'll practice my profession with conscience and dignity and in accordance with good medical practice. I'll foster the honor and noble traditions of medical profession. I'll give to my teachers, colleagues, and students the respect and gratitude that is their due. I'll share my medical knowledge for the benefit of the patient and the advancement of healthcare. I will attend to my own health, well-being, and abilities in order to provide care of highest standard. I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat. I'll make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Please give a round of applause. Congratulations, Riva. Next, we have Sanvi Kamaldeep Chawla. Please give her a huge round of applause. Good morning. આમાંથી કેટલા ડોક્ટર પેરેન્ટ્સ પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ્સ કેટલા
કેટલા ફેમિલીમાંથી ફર્સ્ટ ટાઈમ ડોક્ટર બનશે? Many. Right? Same thing happened when I had taken the admission in first MBBS. I was the first doctor in my village. Right? So congratulations to all of you. It's a 10th batch. You know what is the importance of 10 number? Is a movie, if you see 10 commandments, right? Thus, the 10. Same way, Messi, Maradona, Sachin Tendulkar, they all using a 10 number jersey. So, those who are skillful and extraordinary will be given a 10 number. So, our 10th batch is extraordinary. Give them a big applause. See, આમાંથી કેટલા બધા ગુજરાતી મીડિયમમાંથી આવ્યા છે, ડોન્ટ વરી, રાઈટ? અવર ટીચર નોઝ ધ ગુજરાતી વેરી વેલ, સો દે વિલ સોલ્વ યોર પ્રોબ્લેમ. સો ફોર લેંગ્વેજ ઇઝ નોટ અ બેરિયર, ઇઝ જસ્ટ અ લેંગ્વેજ. સો ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધ થિંગ્સ. નેક્સ્ટ. સી, પહેલાં MBBSમાં કેવું હતું કે એડમિશન લે, પાસ થાય, ડૉક્ટર બની જાય અને પેશન્ટ ટ્રીટ કરે. This is the old medical education. Now, new medical education is the competency-based medical education, where it started in 2019 batch and revised subsequently, and this is a 25 batch, so 10th batch for our college. And what is competency-based medical education? Dr. Vasim will teach you a detail in the things. Next. See, પહેલા ડૉક્ટર એટલે ડૉક્ટર, ખાલી પેશન્ટ ટ્રીટ કરે. નાઉ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ. દે આર ક્લિનિશિયન, દે આર લીડર, દે આર ટીમ પ્લેયર, દે કોમ્યુનિકેટ ઇફેક્ટિવલી. જો સારી રીતે વાત કરતા આવડે તો તમારા પ્રેક્ટિસ સારી ચાલે. Journey from books to healing hands by Ishita Sinha, narrator Nitin Walia, Spandan Shah, Rituja Wankhede, Heli Patel, Mehak Thakkar, and for taking care of audio and visual we have Keval Gojia, and for lights we have Sujit Patel. Please welcome them with a huge round of applause. What is BP? 80/60. Very low. ECG का अभी तक नहीं आया मैम. अरे make it quick. मुझे सारी रिपोर्ट्स 2 hours में चाहिए. कोई सीरियसनेस ही नहीं है आप लोगों में. मैम वो वार्ड 2 नंबर का पेशेंट सीरियस है अभी. Wait a minute. Hello everyone. I am Dr. Rituja Wankhede and I am a physician here. यहाँ कोई negotiation नहीं है. Everything is now and everything is important. मैं यहाँ हूँ तो मेरे patients की hope हूँ. Otherwise you can't tell कि रात कब निकल गई और नया दिन कब आ गया. There is no track of time. और मेरे patients ना कभी-कभी मुझ पे विश्वास नहीं करते. कोई कहता है कि कितनी दवाइयाँ दे रही है, तो कोई कहता है कितनी फालतू की रिपोर्ट्स करवा दी. और तो और किसी का विश्वास तो अपने घर के नुस्खों पर ज्यादा है. और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं. मैम थैंक यू मैम, आपने मेरी जान बचा ली. अगर आप सभी रिपोर्ट्स नहीं लिख पाते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि गैस नहीं हार्ट अटैक. आप ही की वजह से ही तो आज मैं जिंदा हूँ. थैंक यू मैम. बस इन्हीं सभी के कारण तो डॉक्टर बनने पे गर्व है मुझे. प्रोफेशन टफ है मेरा पर सुकून भी बहुत है. जब मेरे पेशेंट्स रिकवर होते हैं ना, तब every tough decision feels worth it. Feels like going back and doing it all over again. मेडिसिन एक बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, बट इट्स टाइम इट शुड ऑल्सो बी वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्रोफेशन. I love my profession, पर डॉक्टर बनने के लिए 5.5 साल मेहनत की है मैंने. सच में वो दिन भी क्या दिन थे.
वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। कि मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, कि मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। लगातार 2 साल 11वीं 12वीं में दिन रात मेहनत करने के बाद आखिर नीट का रिजल्ट आ गया और ऋतुजा का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। तेरा नाम क्या है? न्यू एडमिशन? हाँ, तू भी फाइनल ईयर। तू कहाँ से है? अरे नर्मल, कहाँ से है? अरे दीदी, मैं तो बस इधर अपना अहमदाबाद ही रहती हूँ। दीदी सॉरी, आई डिडंट न्यू कि आप फाइनल ईयर से। अरे नर्मल, चल कैंपस दिखा दे। इस मुलाकात के बाद कॉलेज का सफ़र शुरू हो गया और देखते देखते 2 हफ्ते बीत गए। फर्स्ट ईयर का सबसे मुश्किल पर सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट है एनाटॉमी। कैडेवर, फोर्सेप्स, स्काल्पल, इन सब से डर तो बड़ा लगता है, पर बच्चे एंड में डायसेक्शन करना सीख ही जाते हैं। आर यू एक्साइटेड फॉर योर डायसेक्शन हॉल्स? सो आइए देखते हैं हमारे बच्चों का डायसेक्शन हॉल का हाल। હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, તો હું છું તમારો એનાટોમીનો પ્રોફેસર। તમને ખબર છે બધાને કે એનાટોમીના ડિસેક્શન હોલમાં શું હોય છે? ડિસેક્શન હોલમાં આપણે કેડેવરના ઇન્ટરનલ ઓર્ગન્સ, સ્ટ્રક્ચર્સ અને આ બોન્સ, આ બધા જનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો હોય છે। ઓ ભાઈ ઓ, આ શું કરે છે તું? સ્નેપ? આવું ના કરવું જોઈએ। કોઈને ખબર છે આવું શું કામ ના કરવું જોઈએ? ઓકે, આગળ આવો। ગુડ, નેક્સ્ટ। ઓકે, ચલો ડોન્ટ વરી। હું તમને બધા જ ને આજે કેડેવરનું ઇમ્પોર્ટન્સ કહું। કોઈના પ્રાઇવસીની વાત હોય, કોઈના ઇમોશન સાથે મિસબિહેવ ના થવું જોઈએ। અને હા, જે લોકો પોતાની ડેથ પછી પણ આપણને બોડી ડોનેટ કરે છે તો આપણે તેમની રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ, સ્નેપ કે ફોટો ના લેવા જોઈએ। ચલો હવે આપણે આગળ વધીએ। આજે આપણે આ સ્કલનો અભ્યાસ કરવાનો છે। તો આ છે આપણું સ્કલ। અહીંયા છે બેઝ ઓફ સ્કલ અને અહીંયા એક્ઝેક્ટ આવેલું છે ફોરામેન મેગ્નમ। તમે બધા જ 1 બાય 1 આ સ્કલને જોઈ લો। अरे दो मुझे, हाथ नहीं चाहिए, स्कल दो मुझे। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में मंजिल आती नहीं कभी, कि जिंदगी में मंजिल आती नहीं कभी, एक पाते ही दूसरी तलाशते हैं सभी। एनाटॉमी सीखने के बाद ये बच्चे फिजियोलॉजी सीखने में लग जाते हैं। आइए देखें क्या सीखा इन्होंने फिजियोलॉजी लैब में। निकाल लिया? हाँ। वाओ, कितना अच्छा डार्क रेड ब्लड है, थोड़ा शेयर करना? नहीं, नो। अरे तुम मुझे ब्लड दो, मैं तुम्हें यूरिन दूंगा। अरे शेयरिंग इज केयरिंग। इतना भी नहीं डूबता है। एग्जाम्स आती हैं, एग्जाम्स जाती हैं, पर सबसे ज़्यादा डर तो इन बच्चों को वाइवा का ही होता है। पता नहीं फैकल्टी क्या पूछ ले। वाइवा में कितना भी बोलो कम ही पड़ जाता है। सॉरी बोलने के अलावा हमारे बच्चों को ज़्यादा कुछ नहीं आता है। આવો આવો, શું વાંચ્યું છે ભાઈ? ગુડ મોર્નિંગ સર। અરે ભાઈ, તે વાંચ્યું છે શું? સર રોલ નંબર 125। ઓ 128, તું આજે વાંચીને શું આવ્યો છે? સર્જરી। સર્જરી? સર્જરી તો બહુ જ મોટો સબ્જેક્ટ છે। ચાલ એક કામ કર, તારા પેશન્ટની હિસ્ટ્રી બોલ છે। presenting the history of 25-year-old male, नहीं female, नहीं मेल મેલ ફિમેલ શું કરે છે તું? ભાઈ એક્ઝામિનેશન થી સ્ટાર્ટ કર। એક્ઝામિનેશન માં શું? એક્ઝામિનેશન માં સાઇડ શેપ સરફેસ માર્જિન બોલી જા। સાઇડ से સરફેસ માર્જિન રિપીટ કરવાનું છે તારે, રિપીટ કરવાનું છે। તારા પેશન્ટને શું થયું? તારા પેશન્ટની હિસ્ટ્રી બોલ। પેશન્ટ ને તો સર હર્નિયા। ડાયરેક્ટ હર્નિયા। જો આ છે આપણા ડોક્ટર ફ્યુચર સ્પંદન, જેને હિસ્ટ્રી લીધી નથી, હિસ્ટ્રી ખબર નથી, પણ એને ડાયગ્નોસિસ ખબર છે। આવી રીતે કેમ ચાલશે?
ભાઈ તને બધું જ ખબર હોવી જોઈએ. તું કઈ રીતે પેશન્ટને હેન્ડલ કરીશ, તારા પર કેટલા લોકોની રિસ્પોન્સિબિલિટી હશે. આવું ના થવું જોઈએ. સોરી સર, નેક્સ્ટ ટાઈમ વાંચીને આવીશ. ऐसे ही सीखते सिखाते गिरते संभलते आखिर आ गया एग्जाम का टाइम. मेडिकल एग्जाम्स आर रियली वन ऑफ द टफेस्ट वी हैव इन द वर्ल्ड. दीदी कल एग्जाम्स है, इतना सारा सिलेबस और इतना कम टाइम, पता नहीं सब कैसे होगा. कल एग्जाम है? हाँ. अरे एग्जाम्स तो आती रहती है, टेंशन मत ले, मैं जितना बताऊँ उतना कर हो जाएगा. थैंक यू. पूजा, काफी रात हो गई, सोना नहीं? बस थोड़ा पढ़ के फिर मैं सो जाऊँ. ठीक है, जल्दी सो जाना. गुड लक. अरे दीदी दीदी सुनो. अरे हुआ क्या? अरे मेरा रिजल्ट आ गया और मुझे डिस्टिंक्शन आया है. अरे वाह, ये तो बहुत सही है. Congratulations, proud of you. चल पार्टी करते हैं. अपने घर से दूर आए इन जूनियर्स को अपने दोस्तों में, अपने सीनियर्स में अपना परिवार मिल जाता है. फिर प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका सल्यूशन निकल ही आता है. ऐसे ही देखते देखते 5.5 साल बीत गए और ऋतुजा आज एक होनहार एंड हार्ड वर्किंग डॉक्टर है. सच में कॉलेज डेज आर वन ऑफ द बेस्ट. सारे इमोशंस फील हो जाते हैं. अरे ये तो मेरे कॉलेज की डायरी है. थकते थकाते रोते रुलाते फाइनली फर्स्ट ईयर से निकल के हम पहुंच जाते हैं इन द ऑफिशियल सेकेंड ईयर ऑफ एमबीबीएस. सेकेंड ईयर की सबसे एक्साइटिंग बात, वेलकम टू द हॉस्पिटल. अब क्या बताएं, वार्ड शुरू होते ही बचपन से लेकर आज तक डॉक्टर बनने के जो भी सपने देखे थे वो सब अपनी आंखों के सामने सच होते नजर आए. मन में ठानी कि हाँ, टाइम पास तो नहीं करेंगे, बट पूरा जोश 1 महीने में ही निकल गया. हिस्ट्री लेने में बोर होने लगा. फिर एक दिन किसी अंकल ने बड़े प्यार से डॉक्टर मैडम कहकर बुलाया और उस दिन के बाद मैं 3 दिन तक उसी की खुशी में खोई रही और मुझे वार्ड में फिर से पढ़ाई करने की अच्छी मोटिवेशन मिल गई. बस ऐसा ही 9 से 12 तो मस्त निकल जाते थे, लेकिन उसके बाद फार्मैक, पैथो, माइक्रो बहुत रुलाते थे. पैथो की वो पिंक एंड ब्लू साइड याद रख लो तो जिंदा हो तुम. फार्मैक के ड्रग क्लासिफिकेशंस याद रख लो तो जिंदा हो तुम. माइक्रो के सारे ऑर्गेनिज्म याद रख लो तो जिंदा हो तुम. हाय, मैं तो मर ही गई. बट जोक सपाट, पूरे एमबीबीएस में मैंने सबसे बेस्ट मेमोरीज बनाई सेकेंड ईयर में. वो क्या कहते हैं, हाँ, कोर मेमोरीज. सारे फेस्ट, सारे फेस्टिवल, सारी पार्टीज, इट वाज सो मच फन. जितना मजा पूरे साल किया उसकी भरपाई मतलब सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम. यह पड़ाव पार करने के बाद आता है थर्ड ईयर. वैसे यहाँ आके थोड़ी खिटपिट तो शुरू हो जाती है क्योंकि पढ़ाई की टेंशन जो बढ़ जाती है. FM and PSM पढ़ते पढ़ते रात हो जाती है. बट करो ना फिक्र क्योंकि सीनियर्स के नोट्स है इधर. फिर कुछ बची कुची हिम्मत लेके हम फाइनली पहुंच जाते हैं इन द 4th ईयर ऑफ एमबीबीएस. तब जाके शुरू होता है ना असली पढ़ाई का दौर. मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, गायनेक पे करे ढंग से गौर क्योंकि 4th ईयर एमबीबीएस एग्जाम इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड. और अगर ये निकाली हो तो जनाब हम डॉक्टर हूँ या इंटर्न हूँ कहकर इतराएंगे ही ना. हाँ, तो ऐसे ही रोते थकते निकल जाते हैं 5.5 साल और हम हमारे बचपन के सपनों को पूरी तरीके से जी ही लेते हैं. बाय डॉक्टर ऋतुजा वानखेड़े.
you all for your wonderful performance. એકવાર ફરી તાળીઓ થઈ જાય. We are honored to welcome Dr. Wasim Sheikh Sir, Assisting Dean and Professor, Physiology, here at Parole Institute of Medical Sciences and Research. He brings with him not only a wealth of knowledge and expertise in the field of physiology, but also a deep commitment to advancing the academic and research culture of our institution. I request Sir to please explain the curriculum outline to the freshly joined students. Before that, we'll have 2 minutes of blackout for preparation. Good afternoon. How is the afternoon? Afternoon हुई ना? शुरू करें? मैं इसको कहूँगा ऊँट अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, क्योंकि अब ये करिकुलम है. जैसे सर ने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि બાટલામાં કેવી રીતે ઉતારવાનું, પછી હવે આપણે વાત કરીએ બાટલો કયો ચડાવવાનો. The curriculum is about giving the right, making the right diagnosis, making the right treatment, giving the right treatment, right? So let us go ahead. Next slide, please. So Sir William Osler, known as the father of modern medicine, इन्होंने कहा था कि the practice of medicine is an art, not a trade. A calling, not a business. A calling in which your heart will be exercised equally with your head. यह दिल का मामला है. जो डॉक्टर का प्रोफेशन है वो दिल का मामला है. हम कहते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर आप ऑपरेशन भी कर रहे हैं या डायग्नोसिस कर रहे हैं, अगर आप दिल से करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी. So that is the whole idea, that you have to work with the heart, with empathy. This is what the saying is about. Next slide, please. So what are we going to have in this few minutes? What we are going to discuss is what is the emphasis which the NMC gives in the curriculum. So it is a standardized exam which they are thinking to bring in uniformity, and which will give you license to practice. और उसी exams के marks में they say that you will be going for your post graduations. So no PG exams then. The next exam का theory marks, next exam का practical marks, that will make you eligible for taking admissions in the postgraduate courses. ये जब होगा तब, अभी तो PG NET है. Next slide please. इसका लाइसेंस के लिए क्या है? कंप्लीशन करना है ये इंटर्नशिप को, और कंप्लीशन डेडलाइन है विद इन 10 years of admission and 2 years after completing MBBS. MBBS फाइनल MBBS के एग्जाम करने के बाद 2 साल में इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है by hook or crook. Okay, and the whole MBBS program within 10 years. Next slide please. ये NMC ने responsibilities दे दी कि जो हम आपके साथ शेयर करेंगे. Now 200 students are here, so we'll be sharing you what a student is supposed to do. Next slide please. Student की 2-3 responsibilities जो NMC खुद बोलता है आपको करनी है, आपकी जिम्मेदारी है. आपकी जिम्मेदारी है for academic growth, आपकी जिम्मेदारी है for your personal growth. We give you opportunities here, but it's your responsibility, आपकी जिम्मेदारी है कि उनको grab करें और सीखें और अपने आप को बढ़ाएं. And responsibility to a society and national goals. These are all responsibilities of a medical student. So the college will give you all the opportunities, the college will give you the mentorship program, but then finally it is you who are supposed to take the responsibility. Next slide please. Thank you so much. और खुशी तभी होती है when what we think, what we say and what we do are in harmony. So we will do that. We will do that. जो यहाँ पे सुना वो करोगे, करेंगे. थैंक यू सो मच. और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, इंस्टीट्यूट ने आप सारे स्टूडेंट से कॉन्टेक्ट डिटेल्स लिया है, स्टूडेंट्स का ही नहीं उनके पेरेंट्स का भी. और एक इम्पोर्टेंट चीज जो होगी वो है अटेंडेंस. हम आपको रेगुलर अपडेट देंगे पेरेंट्स को और उनका जो परफॉर्मेंस हो रहा है उसके बारे में, ताकि आप भी उनका ट्रैक रख सको. Okay, because at the end, towards the end of the university exams, आप आओगे फिर सर इसका अटेंडेंस कम है, ये तो हम ऐसा नहीं, आपको पहले से बताया जा रहा है, आपकी जिम्मेदारी है. पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कीप अ ट्रैक ऑफ योर स्टूडेंट, बट डू नॉट कॉल अस वेरी फ्रिक्वेंटली. हमको जब जरूरत लगेगा हम बता देंगे आपको, राइट? बट मेंटर्स के साथ आप हमेशा कांटेक्ट में रह सकते हैं. जब मेंटर्स की लिस्ट आ जाएगी, यू कैन कीप इन टच विद द मेंटर्स. थैंक यू सो मच.
you so much, sir. I would like to introduce about the student council of our college, the vibrant heartbeat of our campus life, bringing together energy, creativity, and leadership from across all batches. Organizing events like Confluence, which plays a pivotal role in enriching both the academic and personal growth of students. From sports tournaments that ignite team spirit to cultural events celebrating art. इसका तीसरा साल है ना, अभी 2 साल बेटा रख दे सबा, रख दे, तेरे भी बराबर पकड़ के बैठना पड़े बेटा। कौन सी सानिया तेरी बैच? डी डी। सानिया का वाइट कोट सेरेमनी हो चुका है और अभी कॉलेज की तरफ से खाने का है। क्या खा रही है सानिया? छोले भटूरे, छोले भटूरे, हलवा है, पूरी है, पापड़ है, छाछ है। सबा, अक्सा, छाछ भी मैंने ले भर के दे दी।